हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हम यहाँ पर मोस्ट आस्क्ड बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यू की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। हम प्रीवियस 25 वीडियोज में 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से टोटल 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 10 मोर क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक इकोनॉमिक्स के हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अराउंड 20 to 20% क्वेश्चन जो होते हैं, 20 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, elasticity of demand at the intercept made at y-axis will be equal to 1 infinity 0 or less than 1. Suppose there is a straight line demand curve and the question is asking that in case of a straight line demand curve, elasticity of demand at the intercept made at y axis। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर elasticity of demand कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि elasticity of demand अगर हम पॉइंट मेथड से निकालें तो लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। तो यहाँ पे टोटल जो लोअर पोर्शन हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक ए एंड बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और जो हमारा अपर पोर्शन है वो 0 होगा। तो हमारी जो elasticity ऑफ डिमांड होगी वो अराउंड इंफिनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द इंटरसेप्ट मेड एट वाई एक्सिस will be equal to at the same time if there is a demand curve like this, and it is asking about that at x axis यहाँ पर इंटरसेप्ट के पास आपकी ईडी कितनी होगी। तो यहाँ पे प्राइसेस होते हैं, हम जानते हैं, इस वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो लोअर पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 0 है, और जो अपर पोर्शन है वो ए टू बी है। तो अगर हम किसी भी जीरो को कितने भी नंबर से या कितने भी पोर्शन से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी एट एक्स एक्सिस दैट विल बी इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर गुड एक्स द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज, और दैट इज इंक्रीज इन क्यूडी is more than percentage change decrease in price. The coefficient of elasticity of demand, it is more than percentage change or decrease in price. So the coefficient of elasticity of demand will be 1 less than 1 greater than 1 0. So it will be greater than 1 because percentage change in price is less than the percentage change in quantity demanded. Next question is, in case of normal good, the income elasticity of demand is positive, negative, 0 or infinity. So our answer is positive. In case of normal good, the income elasticity of demand will be always positive. Next question is, demand for good Y is elastic. In the price of the good increases, it is if not in. So if the price of the good increases, then the total expenditure on the good will fall, increase, remains the same, any of the above. Again, we have to look the question. Demand for good Y is elastic. If the price of the good increases, then the total expenditure on the good will fall because consumer will adjust its income levels and prices. The price of good M increases, however, there is no change in quantity demanded. The demand of curve M would be what? The price of good M increases. Suppose this is quantity demanded on horizontal axis and this is price on vertical axis. So it is saying that there is no change in quantity demanded. Suppose there is no change in quantity demanded. The demand, suppose like this, price was earlier P1 and price increases from P2. But there is no change in quantity demanded. So a horizontal line parallel to x-axis, a vertical line parallel to y-axis, a downward sloping line, or a upward sloping line. So it will be a vertical line parallel to y-axis. This is x-axis and this is y-axis. So this type of elasticity of demand will be known as perfectly inelastic demand. Next question is, consider the given statement, change in price causes change in demand. This is an example of a quantitative statement, qualitative statement, both 1 and 2.
neither one nor two. So it is a qualitative statement. We do not get any idea that how much change there will be in the quantity demanded when price changes. State which of the following is not a determinant of demand, taste and preferences of the consumer, income of the consumer, price of substitute goods, quantity supplied of the good. So determinants of demand are basically the factors that influence how much of a product consumers are willing and able to purchase at a given price. These include taste and preferences, income of consumers, prices of related goods, or we can say substitute goods, or expectation of future prices or income, or number of consumers as well. But here, quantity supplied relates to the supply side, not demand. Hence, it is not a determinant of demand. Our next question is, a movement along the demand curve is best described as increase in demand, decrease in demand, expansion in demand, contraction in demand. Suppose there is a consumer's demand curve like this. So here there is a movement along the same demand curve when price changes. So quantity demand will also change. If there is a decrease in price, there will be an increment in quantity demanded. So if there is a movement along the same demand curve, it will be the situation of contraction or expansion of demand curve. So answer 3 and 4 will be the correct. So that is option 2. But if there is a shift in demand curve, that is rightward shift or leftward shift, leftward shift. In case of leftward shift or rightward shift, it will be termed as increase in demand or decrease in demand. Our today's last question is, price of coffee later increases. Because of this, the demand for coffee espresso will increase, decrease, remains unchanged, or any of the above. So in this question, the right answer is increase, because we know that coffee later and espresso are substitute goods. When the price of one rises, consumers shift to the other. So as the price of later increases, consumers will buy more espresso instead. Thank you so much for watching. और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप तब तक के लिए कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपका स्कोर कितना है, 8 है, 9 है या 10 है। अगर किसी का स्कोर 8 है तो ए कैटेगरी में है, किसी का स्कोर 9 है तो वो ए प्लस में है, और किसी का स्कोर अगर 10 है तो वो ए प्लस प्लस में है। अगर किसी का भी स्कोर 8 से कम आ रहा है तो उसको अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी करने की ज़रूरत है, और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए ये पूरी सीरीज देखें और इन क्वेश्चंस को मास्टर कर लें। हर तरह के एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।